तो आज हम देखेंगे कि इथिकल हैकिंग का वीक 10 असाइनमेंट नंबर 10. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following can be used as countermeasures to prevent hardware based attacks? ओके, सो मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो काउंटर मेजर्स टू प्रिवेंट हार्डवेयर बेस्ड अटैक्स? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एनक्रिप्ट डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स एंड बसेस. ऑप्शन बी भी हो जाएगा दैट इज ऐड डमी सर्किट टू जनरेट रैंडम नॉइज. ऑप्शन सी भी होगा दैट इज प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन यूजिंग पीयूएफ. सो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, अब इसका होगा एबीसी ओनली. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ऑप्शन ए था एनक्रिप्ट डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स एंड बसेस. ओके, सो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि encrypting data stored in registers and buses helps prevent data leakage through side channel attacks, where attackers attempt to exploit unintended leakage like power consumption or electromagnetic radiation to gather sensitive information. By encrypting the data, even if the attacker gain access to physical hardware, the information remains secret. Okay. So option B भी होगा add dummy circuit to generate random noise. That is adding dummy circuits to generate random noise is an effective countermeasure against side channel attacks. Side channel attacks exploit physical information such as power consumption or electromagnetic signals. Dummy circuits introduce noise, making it harder for attackers to extract meaningful data from the hardware signals. So option C भी होगा provide authentication using PUF, that is physically unclonable functions. So PUF based authentication is a hardware security measure that leverages the intrinsic physical characteristics of a device to create a unique unclonable identity. So this makes it difficult for attackers to replicate or tamper with the hardware. It is particularly effective in preventing cloning or spoofing of hardware devices. So only option A, B, C, it is the hardware based attack. और जो option D है use secure cryptography algorithm, it is software based attack, not hardware based attack. It is software based attack, इसलिए ये cancel हो गया, होगा नहीं. So using secure cryptography algorithm is crucial for overall data security, but is more focused on software level protection rather than preventing hardware based attack. Okay, so it is the software level protection. Okay, not hardware. So only ABC true. Okay, only ABC true. Okay, so question number 2, which of the following statements is are false for side channel attack? Side channel attack के लिए false कौन कौन सा? So इसका एक्सप्लेनेशन यही देखेंगे कि पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्चुअली फॉल्स होगा. ये दे एक्सप्लोइट सम वीकनेस इन द एल्गोरिथम, ये फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा? कि साइड चैनल अटैक्स डू नॉट रिले ऑन वीकनेस. ओके, ये डू नॉट रिले वीकनेस in the cryptographic algorithm, it's algorithm itself, but rather than information leaked during its physical implementation. For example, they exploit power consumption, timing information, or electromagnetic information during execution process. So यहाँ पे दिया हुआ है some weakness, actually it is do not rely on weakness, so इसलिए false हो गया. Okay, तो और एक false होगा ऑप्शन नंबर डी, they only require a set of input and output of the algorithm. So ये false है. Okay, so ये false है. Okay, so ये false है. Explanation नहीं हुआ कि side channel attack typically require more than just input and outputs. They often rely on physical measurements such as timing, power consumption, or electromagnetic leaks to gather information about the internal state of device during the algorithm's execution. Simply knowing the inputs and outputs does not provide the necessary information for a side channel attack. Okay. So ये AD false हो गया. ओके, ये AD false हो गया. ट्रू होगा और भी ऑप्शन देख लेते हैं. बी ये ट्रू होगा, क्योंकि
they exploit some weakness in the implementation of the algorithm. ये true होगा क्योंकि side channel attack exploit vulnerabilities in the physical implementation of the algorithm. The example, the web cryptographic algorithm is executed on hardware, not the algorithm itself. Okay, so ये true है. C भी true होगा. They require physical access to the device क्योंकि side channel attacks generally require physical proximity to the device being attacked in order to the measure side channel information such as power consumption, electromagnetic emission, or timing data. That's it. So BC true हो जाएगा, only false होगा AD, false होगा AD, okay, false होगा AD. Yes. Question number 3, which of the following is a typical exploited in side channel attack? Okay. So exploited in side channel attack, that is electromagnetic emission होगा, then timing analysis of an operation and power consumed during computation, but space complexity नहीं होगा. Okay. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Yes. तो सारे के सारे होगा बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम नहीं होगा. तो इसका आंसर हो जाए फिलहाल एबीडी. ओके, एबीडी. यस. तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि साइड चैनल अटैक्स ऑफन एक्सप्लॉइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन generated by a device during computation. By monitoring these emission attackers, okay, can gather information about the internal operation of the device, such as bits in cryptographic algorithm. Then B होगा timing analysis of an operation. So timing attacks analyze the time taken by an algorithm to perform operation. Small variation in timing can reveal information about the data being processed, especially in cryptographic operations, where different inputs may cause the algorithm to take slightly different amount of time. So D, power consumed during computation. So power analysis attacks exploit the power consumption patterns of a device. These patterns can leak information about the internal state of the computation, such as the values of cryptographic keys, by measuring fluctuations in power usage during different operations. तो C, space complexity नहीं होगा क्योंकि space complexity refers, ये false है क्योंकि space complexity refers to the amount of memory used by an algorithm, which is a theoretical measure in computational complexity theory, and it is not typically exploited in side channel attacks. So side channel attacks focus on physical properties like timing, power consumption, and electromagnetic emissions. Okay. So इसका आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन एबीडी. क्वेश्चन नंबर 4, ये न्यूमेरिकल है पॉइंट. सो फॉर मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशन ऑफ x to the 13, how many squaring and multiplication operation would be required? So to compute x to the 13 using modular exponentiation, the binary representation of 13 is binary representation क्या होगा 13 का 1102. ओके, 1101 होगा. ओके, सो 13 का बाइनरी होगा 1101. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट x to the 13 by following the square and multiply method. So पहले इसका बाइनरी निकालेंगे. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13 इज 1101. सो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सिंस यू नीड टू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली, तो ये वाला स्टेप होगा. ओके, स्टेप 1 इनिशियलाइज विद x स्क्वायर 1. देन स्टेप 2 में स्क्वायरिंग टू गेट x स्क्वायर. देन स्टेप 3 में मल्टीप्लाई बाय x टू गेट x क्यूब. देन स्टेप 4 में स्क्वायरिंग s क्यूब टू गेट x स्क्वायर 6. स्टेप 5 में स्क्वायरिंग x स्क्वायर 6 टू गेट x स्क्वायर 12. स्टेप 6 में मल्टीप्लाई x स्क्वायर 12 बाय x टू गेट x स्क्वायर 13. तो यहाँ पे कितना स्क्वायरिंग हुआ, स्क्वायरिंग 2 4 5 स्क्वायरिंग मींस 3 स्क्वायरिंग, मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे 3 स्क्वायरिंग एंड 2 मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ. पहले इसका बाइनरी निकालो. ओके, स्क्वायर. ये जो लैंग्वेज स्टेप्स है
ये इसका न्यूमेरिकल स्टेप्स, ये लैंग्वेज स्टेप्स, ओके, ये लैंग्वेज स्टेप्स, ये इसका न्यूमेरिकल स्टेप्स, ओके, इसको गो थ्रू कर लेना। तो एट लास्ट, तो ये करने के बाद एट लास्ट, ओके, आफ्टर सॉल्यूशन एट लास्ट देखो यहाँ पे 3 स्क्वायरिंग एंड 2 मल्टीप्लिकेशन, सो 3 स्क्वायरिंग एंड 2 मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायरिंग एंड 2 मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 8। तो यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करना, ओके, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ओके। यहाँ पे मैं एल्गोरिथमेटिकली लिखा हूँ स्टेपिंग करके, और यहाँ पे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, तो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज पावर एनालिसिस डू? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट मेजर्स वेरिएशन इन पावर कंजप्शन ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि is a power analysis is a type of side channel attack that focuses on analyzing the power consumption of a device while it performs cryptographic operations by measuring how the power consumption varies with different input and output operations. And attackers can extract sensitive information such as cryptographic keys. Okay. So इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। Question number 6. Which of the following statements describe the unclonable property of UF? Okay. तो unclonable property of UF क्या होगा? तो यहाँ पे सारे के सारे प्रॉपर्टी दिए हूँ, ओके। पहले प्रॉपर्टी है इवेल्युएटेबल, सो गिवन PUF एंड X, इट इज इजी टू इवेल्युएट Y इज इक्वल टू पॉप ऑफ X, ये इवेल्युएटेबल, इसको याद रखो, ये एग्जाम में आता है, चारों दिए, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इवेल्युएटेबल। देन ये यूनिक है, द पॉप ऑफ X contains some information about the identity of the physical entity embedding the PUF। ओके, देखो यहाँ पे ऑन क्लोनेबल पूछा है, मैं बोला था कहाँ से भी क्वेश्चन छूट के आ सकता है, ओके, तो ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन से पूछा था ऑन क्लोनेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ऑन क्लोनेबल प्रॉपर्टी है। तो गिवन PUF, इट इज हार्ड टू कंस्ट्रक्ट ए प्रोसीजर PUF dash where PUF not equal to PUF dash and PUF dash X is equal to PUF of X for all X, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ओके। Or agree one way, that is given only Y and the corresponding PUF instance, it is hard to find X so that PUF of X is equal to Y। तो क्लोनेबल पूछा था, ये वाला है PUF not equal to PUF of X, PUF not equal to PUF of dash, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, क्लोनेबल प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ PUF? तो PUF का एप्लीकेशन होगा एक आइडेंटिफिकेशन एंड की जनरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड की जनरेशन, that is option number A and B, application of PUF, that is identification and key generation। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? फिजिकल अनक्लोनेबल फंक्शंस दैट इज given are widely used for device identification due to their unique unpredictable physical characteristics. Each device with a PUF generates a unique response to a given challenge, making it a reliable identification method. Then key generation, PUF can generate cryptographic keys by using these unique responses to specific challenges as key material. The keys generated are based on the inherent randomness of the device's physical properties. So side channel analysis, this is not an application of PUF, but rather a method of attacking cryptographic system by analyzing the physical information of the system, such as power consumption or electromagnetic emissions. तो डी ऑप्शन था पावर एनालिसिस, ये भी नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड की जनरेशन इज एग्जांपल PUF, दैट इज ए एंड बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
Hardware Trojans have small modification in the circuit. True. Hardware Trojans can be used for defensive purposes. ये भी true है. So option number C. Both here, both one and two are true. Okay. ये option C हो जाएगा. Both one and two option are true. Yes. Question number 9. In which of functions life cycle stages of an IC insertion of the hardware Trojan is not possible? So it is not possible. Actually, hardware Trojan is possible on fabrication. So hardware Trojan is not possible. So specification and deployment. तो अगर पूछता है हार्डवेयर ट्रोजन कहाँ पे पॉसिबल है तो फैब्रिकेशन में, नॉट पॉसिबल तो स्पेसिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statements is a true about hardware Trojan? So hardware Trojan में क्या क्या true है? So it cannot replicate itself, true है. It is difficult to detect, ये भी true है. तो explanation देख लेते हैं. It cannot replicate itself, true है. Unlike software viruses, hardware Trojans have physical modifications to a circuit and cannot replicate themselves. They remain static within the hardware once inserted. So B, it is difficult to detect, ये भी true है. Hardware Trojans are typically small modification, okay, that are integrated into the hardware during manufacturing or design. They are designed to be difficult to detect, especially through conventional testing methods. So option C, it does nothing harmful. Okay, it does nothing harmful to the user's computer system. So ये false है क्योंकि hardware Trojans are specifically introduced to perform malicious actions, such as leaking sensitive data, creating black box, or degrading system performance. Okay. So actually false होगा क्योंकि ये लिखा है it does nothing harmful. Actually harmful करता है ये, nothing दिया हुआ है तो इसलिए false है. तो option A and B true है. मिला लेते हैं. वन का ABC, क्वेश्चन 2 AD, क्वेश्चन 3 ABD, क्वेश्चन 3 ABD, yes ABD, क्वेश्चन 4 A, क्वेश्चन 5 A, क्वेश्चन 6 A, क्वेश्चन 7 AB, क्वेश्चन 8 C, क्वेश्चन 9 AB, क्वेश्चन 10 AB. Okay.